Now in this video lecture, I am going to discuss the next type of hybridization, that is your sp2 hybridization. Now what happens in sp2 hybridization? Right? In this type of hybridization, one s means either it will be 2s, 3s, 4s, 5s. We cannot say 1s means not like this 1s, क्योंकि 1s यदि आप लोगे तो 1p तो होता नहीं है, आप जानते ही हो p होता है एटलीस्ट सेकेंड ऑर्बिट से. दैट्स व्हाई we do not write 1s of this type. 1s means one of the s orbital, whether it is 2s or 3s or 4s. So in this type of hybridization, 1s and 2 of the p orbital and 2 of the p orbitals, whether this p is your 2p or 3p, 2 of the p orbitals mix together to give 3 क्यों? क्योंकि एक s है नंबर में और p नंबर में 2 है. टुगेदर टू गिव 3 sp2. 3 जो बनेगा ना, उस तीनों को आप क्या कहोगे? sp2. ईच ऑफ देम विल बी योर sp2. To give 3 sp2 hybrid orbitals of equivalent energy and identical shapes. So all your 3 sp2 hybrid orbitals, they are of same energy and they are of your same shape. The 3 sp2 hybrid orbitals of an atom. For example, consider of your boron atom. For example, boron in BF3, boron in BCl3 or boron in BH3. So the 3 sp2 hybrid orbitals of an atom are directed towards the three corners, of an equilateral triangle at an angle equal to 120 degree. At an angle equal to 120 degree. Hence, the molecules formed is of trigonal planar shape. For example, boron in BH3, boron in BF3, etc. Now let us discuss that how we can obtain this type of hybridization by representing the pictorial diagram. Say, for example, we have one of the s orbital, say 2s orbital,
you know s orbital is of this state. Say this is your boron hydride, that is BH3. This is 2s orbital and this is 2p. Say this is your 2px. Why? So you can give a plus sign, plus means they are going to overlap, they are going to intermix. And another is your again 2py or simply py, and then there will be your pz. But in this pz we are not giving a plus sign because it is not taking part in hybridization. So this is your unhybridized. ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा. हाइब्रिडाइजेशन में केवल ये तीन ही ऑर्बिटल s, px and py means out of 3 2p orbital will be your used. कोई जरूरी नहीं है कि हम px py ही ले, क्योंकि x तब y तब z लिखते हैं, इसलिए x y को हमने लिखा. कोई कहे कि सर हम y z लें, आप ले सकते हैं. Then your 2px will be your unhybridized because you know all the 3p orbitals are of same energy. But इसकी एनर्जी अलग होगी और इनकी अलग होगी. सपोज करिए कि आप कह रहे हो कि सर जो 2s ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी आपकी 100 किलो जूल है सपोज, और जो 2px है या 2py है, जो भी है 2px है 2py है 2pz है, आप कह रहे हो कि सर इनकी एनर्जी लेट अस सपोज मान के चलिए कि सपोज इट इज योर 150 किलो जूल. So if you sum up the energy of these three orbital, it is 150 150 300 and 300 100 कितना हो गया 400 किलो जूल. तो आपको इक्वली तीनों को बांटना. Now what happens during hybridization? What is hybridization? Hybridization is intermixing of these three, not the fourth. ये fourth किसमें होगा? sp3 में होगा. अगर ये भी मिक्स कर जाता then the hybridization is sp3. जब रिक्वायरमेंट होगी तो sp3 भी देखेंगे, जिस केस में ऐसा रिक्वायरमेंट होगा. बट इन दिस केस इन बोरन इन BH3 or boron in BF3 or boron in BCl3 we have only requirement of sp2. So these three orbital will overlap to give three different orbital and each of them is named of your sp2. Whatever be the shape, उसका shape जो भी हो, सपोज करिए कि एक sp2 ये बना, दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ बना, तीनों की एनर्जी सेम होगी और तीनों का शेप सेम होगा. Now what is the energy? You can write the energy. The total energy is your simply 400 by 3. You can write 133.33 kilojoule. So whatever be the energy, it is your 133.33 kilojoule. Again it is your 133.33 and it is your 133.33. So suppose, let us suppose this is your sp2. अब आप कहोगे कि सर आपने जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप लिखा था वो sp2 में भी वही लिख दिया. मैं सपोज करिए यही शेप हो. Suppose if this is the shape, so after mixing, if they mix, one lobe will be larger. जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है वो एक जगह आ गया और इधर इस एरिया में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है. So that's why this lobe is smaller. So this is one of the sp2. Similarly, we can write this is another sp2, and similarly this we can write suppose this is your third sp2. Now all the three sp2 they are of your identical shape and equal energy, that is 133.33 kilos. Now if they are sp2, now in case of your pure s atomic orbital, pure जब ये mix नहीं किया then the s character is 100%. It is 100% s but it is your 100% p. लेकिन जब ये मिक्स करके जब ये हाइब्रिड बना लिया, जब हाइब्रिड बना करके यह sp2 हो गया तो इसमें s कैरेक्टर भी है और p कैरेक्टर भी है.
अब आप गौर करिए, एक S है, दो P है, सो 1/3 S कैरेक्टर एंड 2/3 P कैरेक्टर। यू कैन से कि 1/3 जो है आपका, इसमें इसकी बात नहीं करिए, 100% S, 100% P, 1/3 S कैरेक्टर एंड योर 2/3 P character. Now what is the meaning of 1/3 S character? What is the meaning of 1/3 S character? 1/3 S character कहने का मतलब in sp2 1/3 means 1/3. You can say it is 33.33% S character. 33.33. That's why in short we write simply 33. उतना पॉइंट में ना लिख करके केवल हम लोग लिख देते हैं, ओके, इट मींस 33% एस कैरेक्टर। देन व्हाट अबाउट द पी कैरेक्टर? इट इज सिंपली डबल, इट इज 66.66% योर पी कैरेक्टर। रफली इट इज रिटन एज योर 66% पी कैरेक्टर। बट यदि एसपी जो हमने डिस्कस किया था, if we consider SP, तो आप कह सकते हैं half is S and half is P. So in this case 50% S character and your 50% P character. तो S कैरेक्टर ज्यादा SP में है और SP से SP2 में S कैरेक्टर कम है। P कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, वहां 50% था तो यहां हो गया 66%। Now these three sp2 hybrid orbitals, just imagine these these three sp2 hybrid orbitals, they must arrange in such a way so that they should repel minimum। कहता है इन तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप ऐसे अरेंज करिए कि इनका रिपल्सन मिनिमम हो। Then how we can arrange? We can arrange at an angle of 120 degree. Means say this is your one sp2, larger lobe, smaller lobe, this is your another sp2, and this is your third sp2. So let us suppose if we have to consider sp2 hybridization of boron in BH3 और BF3, तो आप लिख सकते थे कि दिस इज 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरन इन BH3 और BF3 at an angle 120 degree. So the angle is your 120 degree. See this angle is your 120 degree. This is your 120 degree. So now this is the three hybrid orbitals of boron. अब ये BH3 बनाए नहीं है, अब ये BF3 बनाए नहीं है, अब ये हाइड्रोजन से मिक्स करके बनाएंगे। Now these three sp2 hybrid orbitals, these three, this is your sp2, this is your sp2, and this is your sp2 of boron, either in BH3 or in BF3. All the three have same energy. इसकी भी 133.33 किलोजूल, यहां भी 133.33 किलोजूल और यहां भी 133.33 किलोजूल। लेकिन जब ये आपस में नहीं मिले थे तब जो S था 100 किलोजूल और जो P था that was 150 kilos. Now let us observe that how they combine with hydrogen to form BH3 or how they combine with fluorine to form boron trifluoride. Say this is boron atomic number
number 5, it is your 1s2, 2s2, 2p1. So this is your वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 2s2, 2p1 जो है वो आपका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. और वैलेंस सेल n इज इक्वल टू 2 जो हुआ आपको, ये आपको वैलेंस सेल कहलाया. Now in chemical bonding during hybridization, only the electrons of valence cell, only the orbital of valence cell, outermost cell will take part. तो outermost cell दोनों हो गया, 2s है और 2p भी है, संयुग से यहाँ दोनों है. So we can write boron in ground state we have, it is your 2s2 and this is your 2p1. तो 3 2p ऑर्बिटल होंगे, px py pz, but electron is present only in one of the p orbital. Electron is present in one of the p orbital while rest of the p orbitals are lying vacant. तो उस हिसाब से यहां पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. आप देखिए, your number of unpaired electron in boron, that is 1. So its covalency should be 1. यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, इसलिए इनकी कोवेलेंसी एक होनी चाहिए. बट व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन इन BH3? Naturally it is 3. What is the covalency of boron in BF3? Again it is 3. तो unpaired electron is 1, but it should be 3. It should be 3 to maintain the covalency. कहता है ये कैसे होगा? How is it possible? We can write in excited state. In excited state, one electron from 2s, one electron from 2s is promoted to 2p. एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में आप प्रमोट कर लीजिए. यहां मत डालिए, क्योंकि यहां अगर आप डालेंगे तो फिर तो ये पेयर हो जाएगा, बात वही हो जाएगी. इफ यू प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहां से यहां कर दीजिए, क्या फायदा? ये पेयर हो गया, ये अनपेयर रहा, तो अनपेयर तो एक ही रहा. हमको अनपेयर 3 चाहिए, तो 3 चाहिए मीन्स इसको इस एम्प्टी p ऑर्बिटल में प्रमोट करना होगा. देन व्हाट इज बोरॉन इन एक्साइटेड स्टेट? सो बोरॉन इन एक्साइटेड स्टेट, दैट वी कैन राइट, इट इज योर 2s1 and then we have 1 and 2. ये देखिए 2s हो गया, ये फिर 2p हो गया, ये फिर 2p. Now it will not take part in hybridization. जिसको हमने encircle किया है, that will not take part in hybridization, while these 3 will take part in hybridization or will use in your bonding. This will use in your bonding. ठीक है? तो अब जब ये बॉन्डिंग में यूज होगा, आइए इसको फिर ऊपर लिखते हैं, जगह बनाते हैं यहां. Now if means the boron excited state, it is your 2s1 and this is your 2p2, that is excited. Now what happens? This is hydrogen, this is another hydrogen, this is third hydrogen, sp1p2. So it is your sp2. अगर फ्लोरीन रहता तो हाइड्रोजन के बदले आप फ्लोरीन लगा देते. Now as you know, this is your 3. This is one sp2, this is another sp2 and this is your third sp2. So this is 3 sp2 hybrid orbitals of boron, जो हमने पहले भी आपको बताया. Now these 3 sp2 hybrid orbitals, they are of equivalent energy and identical shape. अब देखिए अल्टीमेटली एक्साइट करने के बाद 3 ही इलेक्ट्रॉन बोरॉन में है,
वो अब प्योर में न रह करके इस हाइब्रिड में देखिए 1 2 एंड 3. Now hydrogen is 1s1, that is s orbital. S orbital is spherical, so this is your hydrogen, this is another hydrogen, and this is your third hydrogen. अब देखिएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां गया, यहां देखिए, that will overlap, again this will overlap, again this will overlap. So this is the overlap diagram for BH3. Now you can say, you can write, this is the overlap or orbital overlap. This is the overlap diagram of BH3, showing, क्या शो कर रहा है, showing sp2 hybridization of boron, showing sp2 hybridization of boron. आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते थे. व्हाट इज द अनदर वे? द अनदर वे इज लाइक दिस. से दिस इज 1sp2, this is another sp2, and say this is your third sp2. Okay, now this is hydrogen, this is hydrogen, and this is your third hydrogen. आप कुछ बुक में देखोगे ऐसा भी, ये शेडेड. Now what is the meaning of this shaded area? This shade means it will show overlap. It will show overlap. So actually this is your sp2, but hydrogen will use your s orbital. So this overlap is referred as your sp2s overlap. Now this bond is your sigma bond. Again this bond is your sigma bond, and again this bond is your sigma bond. ये तीनों सिग्मा बॉन्ड जो बनेंगे वो ड्यू टू sp2s overlap. All the three sigma bond will be formed due to sp2s overlap. sp2 of boron and s of hydrogen. sp2 of boron and s of hydrogen. sp2 of boron and s of hydrogen. And they are at an angle 120 degree. They are at an angle, see this is, they are at an angle 120 degree. इनके बीच जो एंगल आपका है, ये एंगल देखिए, this angle is your 120 degree. Now if we have to describe the overlap in case of your BF3, तो BF3 में आप क्या करोगे, जहां s ऑर्बिटल यूज किए हो वहां आपको p ऑर्बिटल यूज करना होगा. मीन्स लाइक दिस, से दिस इज, ओके, दीज आर द 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन. ओके, एंड फ्लोरीन आप देखिए, फ्लोरीन में p हो जाएगा. क्यों p होगा आप यहां पे देख सकते हो. फ्लोरीन इज योर 1s2 2s2 2p5. सो दिस इज योर 2p5 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. दिस ऑर्बिटल विल बी यूटिलाइज. तो अब आप यहां पे फ्लोरीन का p यूज करिए. दिस इज योर फ्लोरीन, दिस इज fluorine, this is third fluorine, means it is sp2, this will be sp2, fluorine will utilize p. This is your sp2 and fluorine will utilize p. Again this is your sp2 and fluorine will utilize p orbital. However, there will be no change in shape. Shape will be same, that is your triangular planar. The shape will be your triangular planar. So see, this is the shape of your BF3 with a bond angle equal to 120 degree. So I hope you must have understand what is sp hybridization and what is the
sp2 hybridization. In next class, I will discuss sp3 hybridization. Thank you.